देख पिले देह अच्छी सेमती जय जगन्नाथ इरे झुनिया मा दियो बा पिल्ला गोटे मिनिट यस थैंक यू एवरीवन देखा फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ प्रीति पूछी देह सेमती अच्छे दांत टिके प्रॉब्लम करुचे ओके फाइन लेट्स स्टार्ट वर्तमान आम आरंभ करिबा देखो दिस पैराग्राफ आई टॉट यू यस्टरडे we have three valuable sources of information remember काहा को अंडरलाइन कले मु तुमको कहि छी ना आई हैव टोल्ड यू जे मेन पॉइंट को हम मेजर पॉइंट को नोट डाउन करिबा we have to note down major points see three valuable sources of information which gives us a great deal of historical knowledge. This is also a major point. Archaeology, major point. First of all, I will have to go through the passage, the paragraph. We have three valuable sources of information about the distant times, about past, and each of these has given us a great deal of historical knowledge. Historical knowledge. Historical knowledge means knowledge about past. First one, three sources of information. First one is archaeology. Archaeology kaun kare? Now it means it studies the historical remains and ruins of the past, tools, weapons, pots, house foundations, ancient settlements, and the towns that have been left behind by the people like Mohenjo-daro, Harappa situation. Who have vanished जो माने से माने कौन हरप्पा जो सिविलाइजेशन से पूरा ध्वंस पाई जाइछि not a single one is left तेणु हिस्टोरी आर्कियोलॉजी throws a light on this first hela three types of information we got our valuable sources of information but we got precious sources of information from three sources archaeology first one and what is archaeology now archaeology means the study of the materials remains and ruins of the past of the tools weapons and all the judge ଅତୀତର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପଟ୍ସ ଘରର ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ towns everything study on the ancient things is otherwise called archaeology first one is finished second source of historical knowledge is oral tradition we have different types of traditions that विभिन्न प्रकार ट्रेडिशन रु आमे से देश विषय रे बा से रेस विषय रे we get some knowledge but it is partly truth like something is true and something is not true केमिति how to know देखो the second source of historical knowledge is oral tradition मु कहि छि थरे पिला हमकु पैसेज रो ओवरऑल मीनिंग बाहर करबा को पड़िबो हां चाटी दोन पैसेज रो ओवरऑल मीनिंग बाहर करबा को पड़िबो जानिला परे वी हैव टू राइट इन आवर ओन लैंग्वेज आ भीतर कोनोसी लैंग्वेज हम यूज करबा नहीं फॉर कम्युनिकेशन किंतु जो फैक्ट गुडा देछि ताकू लेखिया को पड़िबो सेटा देछि थ्री वैल्यूएबल सोर्सेस आमे कोन थ्री जगह रे फोर करबा की दैट विल बी थ्री तेणु फास्ट हूँ आर्कियोलोजी सेकेंड ओराल ट्रेडिशन मीन्स
Generally, our ancestors are passed down by word of mouth. Passed down माने informed by word of mouth. जहा कही कही किरी आमे बेले बेले कहनु पूर्व काल रे एहा लोक माने एहा विश्वास करा जाउथिला जे लोक माने विश्वास करूथिले जे आमे जदि चांद पूजा करिबा आम देहरे जो एलर्जिक अछि that will be vanished cured एलर्जिक ता बॉडी रे जो स्किन एलर्जिक हुए सेटा क्योर हे जाए we have got a tradition that we have got a belief tenet but we had got a tenet that if we worship the moon then it will be on its first stage जेतले पूरा पतला थाए अमावास्यार परदिन whatever it is चांद पूजा कहती ताहले एलर्जिक दूर हो जाए we get a piece of information particularly from this tradition आमे सांब दशमी भी करू आमर केदा ट्रेडिशन दीज आर कॉल्ड रिलीजियस ट्रेडिशंस आमर परंपरा अछि आमे एई जिनिस करू we celebrate Durga Puja gives us the information regarding Mahishasura or gives us abstract information that good over evil always good trumps तेणु एटा होची ट्रेडिशन रो जो नॉलेज गेन करा जाए दैट इज कॉल्ड ओरल ट्रेडिशन आमे पाऊ कोउथरु ना देखा वेस्ट अफ्रीका लाइक अदर रीजन्स ऑफ अफ्रीका इज रिच इन सच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आ ऊपर बेसी विश्वास जो माने ओरल ट्रेडिशन रो इन्फॉर्मेशन पांती से माने साधारणतः सुपरस्टिशियस माने अंधविश्वासी अंडरस्टैंड कारण से में तांकर पूर्व पुरुष माने जो ट्रेडिशन को मेंटेन करी रखी थिले द ट्रेडिशंस being maintained by their ancestry or ancestors these people today get the information from that is called oral traditions these remembered tradition also किछि परिमाण रे एटा ट्रू are sometimes very useful to historians but care has to be taken for these old traditions also tell things which did not happen the way they are said to have happened or not for the reasons that are given in the story बेले बेले पिला आमे एभली गोटे गोटे ट्रेडिशन देखू जहा जो ट्रेडिशन रो डीप रे किछि मीनिंग थाए डीप रे मीनिंग आमे ताकू माने वी बीइंग नॉट द वाइज पर्सन्स आमे एते ज्ञानी नुह जे गोटे गीत थिला पिला सुनिबो बहु चाली न पारई लो पाद पडु थाए बंका ये गीतटर गोटे लेमैन विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन ए गीतरु से बुझिबो बहु जो दिन सळखी चलिबो पादे पड़ीजीव कौन बहु चौदिन सड़की चलो घरे पड़ीजीव हुका ना कौन एमती गोटाए डका तार अर्थ शुण पिला घरे पड़ीजीव डका तार मीनिंग से नुह ता मीनिंग कौन शुण से तार मीनिंग नुह शुण से मीनिंग तार आम हाँ निश्वास उपर देइछि आमर जो निश्वास बहु चाली न पारइलो पाद पड़ुथाए बंका एपट सेपट हेइकिरी निश्वास रहिछि बिली या भीतर को जाऊची पुणी आसुची बिली भीतर को पशुची बिली आमे ठीक अच्छे जदि जो दिन बहु सड़खी चलो सड़खर निश्वास पलैब से दिन घरे पड़ीजीव डका तामाने एटा हमर ब्रीदिंग ऊपर बा लाइफ ऊपर ये गीतटी किंतु गोटे लेमैन कौन बुझिबो बहुटा नुआ नुआ आसिले से लाज करे जो दिन से लाज छाड़ी दिए से दिन घरटा को ध्वंस करे बा घरे गोटे अलग प्रकार सिहरण खेल दिए से बुझा आम तेणु कि देख फॉर दिस ओल्ड ट्रेडिशंस आल्सो टेल थिंग्स which did not happen the way they are said to have happened जो प्रकार हवा कथा और not for the reasons that are given in the story तेणु it is called oral tradition we have to means bring some historicals they bring information fetch the information from these traditions ये गोटे प्रकार पिला जानिबा पाई इंफॉर्मेशन थर्ड वन पिला देख हाँ थर्ड वन देख then there is third source of knowledge about the distant past of West Africa कौन that is less valuable कौन ना written by the works
written by North African, Arab travelers and historians. से जो लेखा लेखि जाइचंती से लेखारू आमे जहा इनफॉरमेशन पाऊ तीन प्रकार इनफॉरमेशन आमे जानि न पिला हमर जो चाइनीज रा आसी व्हेन सांग या भितर गोटे कोन ना थर्ड वन दैट इज generally derived from the works of the scholars, North African, Arab scholar, Arab travelers, and the historians. Many such books were written by scholars who wrote in Arabic. Some of them of great value. Much later, European also began to write. यूरोपियन माने भी लिखे प्रथम अरब माने लिखुथिले तापर यूरोपियन माने लिखिले हला कोड पोर्तुगीज इंग्लिश फ्रेंच डच एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस ओके a few of their books too are full of useful information okay fine आरंभ करिबा पिला आर टाइटल आमे कोन पाउचे पिला इठी टाइटल फर्स्ट हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओके मु देइछि कोन मु कहूछि कोन हबो देखो पिला ब्लैंक पेज देखो सोर्सेस ऑफ अति सिंपल पिला हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बा नॉलेज ठीक अछि हला गोडली ठीक करिछि द रिटन हिस्ट्री हे माने जो माने सब देइछ टाइटल हिस्टोरिकल सोर्स हाँ ऑफ इंफॉर्मेशन लिखिया को पड़िबो बुझियो जी इनफॉर्म माने आमे मोहेंजोदारो लोक माने केमिति वास करूथिले हाउ द पीपल ऑफ मोहेंजोदारो civilization lived their life we get informed from archaeology we get informed from archaeology understand how the kings lived their lives we get information from books how the kings lived their life or zamindars lived their lives we get information from the books how the people of tirtola गोटे एरिया अछि हमर सेपटे पिला live their lives we get the information from Huensa's work Huensang रो लेखा बाबदरु गोटे जागार चलणी उपरे बे हम इन्फॉर्मेशन पाउथिले तेनु गोटे हला वर्क्स another one is archaeology another one is tradition oral tradition so these three are the sources of historical information okay हाँ sources हाँ हेबा sources of information regarding our ancestors छोटे देलु सीधा ancestors बाबदरे आमे historical लिखि देले जेते छोटो करिवो टाइटल टा सेते भलो बुझेला अच्छा देख मु लिखुची सहजरे केमिति देयर आर three sources of information about history finished बहुत गुड़िया कवर कर जाइथबो about history तीनटा sources of information पैराग्राफ सब बेले गोटे पैराग्राफ बा गोटे प्रेसिज आमे गोटे करि परिबा दीटा करि परिबा प्रॉब्लम किछि नाही इरे एते जे लिखि जाउ पछु करि परिबिन तो टाइटल कोन अछि मु लिखि सारे तमे तम टाइटल को कंपेयर करिबा आ सहित समान होउछि कि नाही बुझेला पिला देख फास्ट कोन आर्कियोलॉजी लिखिबो आर्कियोलॉजी कोन करे there are three sources of information archaeology which gives an insight into the past
थ्रू केमिति जानू तमे जानिच मु कहिछि मटेरियल रिमेन्स एंड रुइन्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन निजे कुह पिला पैराग्राफ अच्छी कि नहीं तमे निजे कुह मु सबुदिन गोटाटा प्रेसी देवी तुम करी आनिया को हां सबुदिन गोटाटा देवी हला हाँ एंड रुइन्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन ओके जानी परलो अच्छा एई रुइन्स कौन ना लाइक टूल्स weapons pots houses etc सरीगला हम पाइगले ना नहीं बा आर्कियोलॉजी अच्छा then comes oral traditions which is partly true and the information is passed down old generations through verbal narrations बुझेला पिला देख तापर ओराल ट्रेडिशन माने आम जेज ता तल से ता पुओ को जणैला ता पुओ आम पुओ को आमको जणैला आमे आम पुओ को जणैलु आम पुओ तांको पुओ को जणैबे ये गोटे पुराना कालर इनफॉरमेशन आमे थ्रू वर्बल नरेशन माध्यम रे पाऊ कौन बुझियो ये कोठी लेखा हेनी ये कोठी खोला हेकिरी मिलिनी तेणु पाइबा प्रथमे खोलिकिरी आर्कियोलॉजी द्वितीय लेखारू पाऊ तृतीय शुणिकी पाऊ तीन टा जिनिस गोटे है देखा आखिरे गोटे लेखिबा भी आ गोटे शुणिबा खोलिबा लेखिबा ए तीन टारू आम इनफॉरमेशन पाऊ खोलिबाटा होची आर्कियोलॉजी शुणिबाटा होची ओराल ट्रेडिशन लेखिबाटा होची वर्क्स ऑफ द स्कॉलर फिनिश्ड इरे पिला हला कौन कहून the third being less valuable consists of travelers and historians from North Africa consists of travelers and historians from North Africa and Arab पिला सुन टिके छाड़ी जली the third being less valuable consists of the works of लेखा लेखी ओके initially the works were written in Arabic but later in European languages finished
फिनिश्ड पिला सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर है नॉर्थ आफ्रिका रू मिले लिखी ना नॉर्थ आफ्रिका लिखी अच्छा वर्तमान कौन आपण पाद धूली टिके देबे सार मु सबुदिन मुंडरे मारिबी काई सेमिति मना होउछु तू इरे काई सेमिति होउछु कहलु लास्ट टा यूरोपियन लैंग्वेज हैला सारंकर क्लास चली तो तेणु पिला टिके कम हैला तथापि अछंती मोर 50-52 जन हाँ है परिबो बट हिस्टोरिकल रहबाकू शुभश्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है परिबो बट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लिखिबो वर्क वर्ड एक्सीड करबनी बोधे मु भाबुची गणित दल देखिया हमर ओरिजिनल केते थिला 245 80 90 हेले भी चलिबो देखा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक अच्छी ना अधिका कोटे है हाँ ना टाइटल छाड़ अधिका कोटे अधिका है ठीक अच्छे है लिखिदब एकाथर के ठीक हो एकाथर के ठीक हे ना अच्छा ये गोटे सरला दरकार से पावर ऑफ नॉलेज गोटे पैराग्राफ लिखुची यही पैराग्राफ टाकू आमे 2 दिन भितर एसे करदबा 80-85 हेले चलिबो पिला पावर ऑफ नॉलेज गोटे पैराग्राफ लिखुची ताकू आमे एसे करदबा मु नॉलेज पावर विषय कहि कहि कि 1000 वर्ड करदेबी किंतु गोटे 100-150 वर्ड भितर किंबा 200 वर्ड भितर गोटे पैराग्राफ लिखुची जोटा सीजीएल रे आसीबो पावर ऑफ नॉलेज व्हाट इज नॉलेज ना देखो पिला रेडी तो नॉलेज मात्र 20-22 शुण पिला शुण समस्ते मु पुणी गोटे प्रेसी काली पठेबी तमे ताको लिखिदब निज भाषा रे 100टा खंडे प्रेसी करदबा प्रेसी करदेले हमर प्रेसी ऊपर गोटे ओवरऑल आइडिया चली आसीबो बुझिला तापरे 100टा खंडे प्रेसी करदबा ओवरऑल आइडिया चली आसीबो तापरे देखिबा नेक्स्ट कथा देखिबा काली तो मु एमती देबी तापरे एसे आ परर एसे लिखिबा मु सोमवार ठारू पिला 8टा रे 7:30 रे क्लास स्टार्ट करिवि मु 8टा रे नो मो देहटा भल नाही बिली मु एकड़ सड मु जाईथली डॉक्टर पाखु हला तेणु मु 7टा रे मु परदिन सोमवार ठारू मु हिंदू एडिटोरियल्स भी मु डिस्कशन करिवि ठीक 7:30 रे क्लास स्टार्ट करिवि बिली भाबिछि बेला बेली सार देले मु टिके पढिबि पुणी मोर न पड़े आज राति मते तम क्लास पर मते पुणी घंटे 1.5 घंटा पढ़िया को पड़ो बुझी हो ना पढ़िया को पड़ो तापर देहर अवस्था धीरे धीरे कौन हो कहल डिटेरियोरेट माने रेटेड हेका जाउची देहर अवस्था धीरे धीरे भांगी जाउची काहे कि मु जानि पारुनी रियली हला बेले बेले भांगी जाउची काहे कि मनटा माने एमिति हे जाईची किछि दिन हेलानी बेले बेले माने ये हे जाउची कोन एनर्जेटिक एक्टिव हे जाउची बेले बेले डाउन हे जाउची एही भलिया कोन होउची जेंति कहंतिनी कोन मो पुओ को किए गुणी कर देइची मते सेंतिया मेंटालिटी बेले बेले जाम हे जाउची बेले बेले पूरा फ्री हे जाउची बेले बेले भाबुची आज सब पढ़ी उड़े देबी बेले बेले भाबुची डाउन हे जाउ सोई पड़ीबी जेंति ये जेंति कौड़ किए कला भलिया हेची मोर सेंति हे जाउची हैला झुन्नी मामा को कही झाड़ी देबे कौन लंका धुआ दे झाड़ी देबो दृष्टि पड़िले जेंति हे जाई सेंति हे जाई जिबा भलो लागुनी बा मृण्मयी जहा कहलु ठीक कथा कहलु
नजर लगी जाइए है सतरे नाई मु खटिबा तू मुना मो खटणी जानू ये कि खटणी मु ऑफलाइन क्लास 12 घंटा करे ऑफलाइन क्लास पिला मु 12 घंटा माने कंटिन्यूअस ठिया हेकरी कर दिए ये खटणी ता आगे किछि नुह मु किंतु जाम हे जाइछि किछि दिन हला पूरा ये हे जाइछि सतरे हौ देख पावर ऑफ नॉलेज नले मु एक्टिव लोकटा ना एक्टिव लोकटा मु तुम बिंदास लोक जानछ मु पूरा बिंदास मो लाइफ रे जहा हे जाऊ हेडा परे देखा हबो कौन करू ना आपण हनुमान एते पूजा करुछंती नजर लागिबनी थैंक यू हाउ देख आरंभ कली मु हाँ देख ना ना से जिनिस होउनी बा से कौन होउछ एक्चुअली कहबी मोर जो बाहरी गलानी सुगर फुगर मु टिके डीपली चिंता करदेली से विषय रे सुगर टेंशन रु बाहरला मो नार किए कंप्लेन कला अन एकेडमी रे सेठू बाहरी गला मोर सुगर तमे जानू तो मु केते इमोशनल हला इन पुणी कंप्लेन जाइछि कोन ना जोगानिया सर इज द बेस्ट फैकल्टी मु तांको पाखरे पढिया को चाहूछि किंतु से काहे की पर्सनल पढौछंती हला एमती पूरा माने सेति केळु मु डिप्रेशन को टिके पळैली काले कोन हबो कोन नाही छुआ गुडा पढुछंती एरे पिला छुआ गुडा मोर पढुछंती जदि या भीतर मनीष तो मरणशील मनीष तो दिने ना दिने मरिबो मैन इज मोर्टल आ भितर जदि किछि हेइगला मोर मो छुआ गुडा मनीष हे नांती बुझी होछि सेति पे टिके डिप्रेशन को पळैली तापरे पुणी फेरी आसतले माने भलो हो जाइछि देह किंतु एम टिके टिके होउछि आ छाड़ लेख पिला पावर ऑफ नॉलेज व्हाट इज नॉलेज बहुत गुडे लिखि देबी हां तमे निजे भी लिखि परिबो सुनो नॉलेज मु आइडिया दउछि बा नॉलेज इज हाँ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए पर्सन बेस्ट फ्रेंड of a person who which accompanies him till he lives on this planet मु नॉलेज विषय खाली पुळाई कहि देई जीवी कोन बुझी परछ तो बा पिला जो पर्यंत तमे बंची थाओ से पर्यंत ज्ञान तमरो सेवा करिवो वर्तमान आम सेवा किए करूची मो सेवा मो नॉलेज माय नॉलेज इज सर्विंग मी नाउ इट माने टिल डेट हला इट हैज बीन सर्विंग मी अटेंडिंग अपॉन मी टिल डेट आज पर्यंत मु पढ़ेइला दिन ठारू आज पर्यंत ज्ञान मोर सेवा करी करी चलीछि हला नॉलेज इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए पर्सन कारण बंची थिबा पर्यंत नॉलेज तम सहित अछि जो दिन मरिबो नॉलेज तम सहित जीव ता माने सबुठारु बेस्ट कौनसी दुनियार कौनसी संपर्क माने एमती रिलेशन संपर्क रखी परिबो नाही जो दिन मरिबो से भी से दिन मरिबो जो दिन जाय अछो तमे से तम संगे अछि बुझिला सो his knowledge is called the best friend of a human being कौन बुझी पल्ला why is it called the best friend ना best friend काहू कहंती तमे निजे संस्कृत रे पढिछ उत्सवे वेशने चैव राजद्वारे श्मशाने स ज तिष्ठति स बांधवः जे उत्सव रे थाए विपद रे थाए उत्सवे वेशने चैव राजद्वारे श्मशाने च राजद्वार जे कोर्ट रे थाए तमे दंड पाइला बेल को असुविधा रे थला बेले मला बेले जे साथी रे थाए ताकू कहंती प्रकृत बंधु तेणु ये सबु जगह रे बोधे थाए तमे निजे कहलो पिला उत्सव रे थाए व्यसन रे थाए विलास व्यसन रे थाए राजद्वार थाए श्मशान रे थाए सो दिस इज कॉल्ड नॉलेज जा बुझेला तो पिला चलिबो 22.5 रखिलो आउ केते रखिबो ठीक अछि यू आर ओके तापर द व्हाई इज इट कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल वेपन देखिबो इट इज कॉल्ड
The most powerful weapon or thing, weapon लिखिबानी, thing in the world, because it can create or destroy the whole world. No, कहला पिला, knowledge can create the world, knowledge can destroy the world. So it is called the most powerful thing on this planet. ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ तार फिजिकल आस्पेक्ट्स को पड़े आसिया. नॉलेज एक्चुअली करे कौन ना देखिबो कौन लिखिलो पिला कहून है इरे कहून ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नॉलेज, a strong base of knowledge helps physical aspect, brain, helps brain function more smoothly and more effectively. এটা physical aspect, effectively, yes or no? এটা physical aspect. ଆମେ ଗୋଟେ paragraph ଲେଖିବା, ବୁଝିଲା? ଆଇତି ଶୁଣ, ତମକୁ କଣ କରେଇବି, ଆଇଡିଆଟାକୁ କେମିତି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କରି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଏସେ ଲେଖେଇବି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବି। କଣ କହିଲ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସି ଘରକୁ ଦେବି ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଠି ଲେଖିବି। 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବ ପିଲା ତମେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡା ପାଇଯିବ, ଆଉ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଚାଲିଆ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉ ଦିନ ଦାନ୍ତର କଣ ହବ, ଉପଡା ହବ କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଂ ହବ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ ପିଲା। କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ। ଭାବିବନି ସାର୍ ଠକୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କେବେ ଭାବିବନି। ହଁ, କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ୟ, ମୁଁ ସବୁ କରେଇବି, ମତେ ଟିକେ ଇଏ ଦରକାର, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି ତ ପିଲା, ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି। ହେଇତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ। ବର୍ଷେ ସିନା କହୁଛି, ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚି ନପାରେ, ଯାହା ନବା କଥା ନେଇଯାଅ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ମରିବ। ହଁ, we become smarter, ହଁ, we become smarter with the power of knowledge। କହି ହବ କଣ, with the power of knowledge and it attires us with problem solving faculty। faculty माने ability। देखिला पिला, ये ब्रेन को स्मूथली एंड इफेक्टिवली रन करिबारे सहायता करे नॉलेज। आमे स्मार्ट हे जाऊ विथ द पावर ऑफ नॉलेज and it attires us with माने covers us बा dresses us with problem solving faculty माने ability। प्रॉब्लम को सॉल्व केमिति करा जीवो से एबिलिटी मुंडरे पुरई दिए नॉलेज। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। बुझेला पिला? सुनिलो ना नहीं मते कुआ। इट आउ कोन करिवो, हां सेटा लास्ट को लिखिबा। इट
helps us. It helps us. It helps us convert our ideas. Convert your ideas into reality. Into reality. No, our idea ta jaha thai taku reality re परिणत करे knowledge and help us reach success in our life. Okay. Moreover, it makes human beings rational. RATIONALE. Rational alla power to differentiate between right and wrong. को गोटा ठीक को गोटा भूल आमे जो जानी पारू that is called rational. तेणु knowledge only एटा करी दिए हला. It helps us again. It helps us outshine our catches. Outshine our catches. माने outshine ला overcome catches ला faults. Weaknesses foibles ला weaknesses लिखि दो पिला foibles weaknesses and dangerous situations in our life. Okay. हाँ कौन पिला जानी पारलो 100टा वर्ड हेले गोटे पैराग्राफ हे जिवो से देइतबो किछि लेख नले 100टा वर्ड हेले भी गोटे पैराग्राफ हे जिवो एटा मु कहबी नॉलेज रो गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट खाली नॉलेज ऊपर गोटे लिखुची पावर ऑफ नॉलेज एटा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखुची जानि पिला आई एम राइटिंग द an introduction part foibles la weakness and dangerous situations in our life. Okay, it allows us to think about issues. Think आउरी बहुत लिखि दे परिबी लेखुचे तमर जत्ति की मने पड़िबो मु लिखि दउची पुलाए तमर जत्ति की मने पड़िबो ताकू लिखि देले से 100 200 वर्ड हे जिबा कोन. Think about issues, topics and challenges. Gauntlets से बा odds gauntlets माने challenges लिखि दबो from many perspectives. हला it allows us to think about गोटे घटना घटिची how can we solve that. विभिन्न दिगरु माने विभिन्न प्रकार आइडिया आसे about the issues, about the topics and gauntlets from many perspectives. This is called sermonization of brain. Sermonization is one of the best teaching methods which were introduced and applied one of the greatest philosophers and teachers on this planet, Socrates. Socrates konosi decision naba purbaru before taking any decision he used to discuss with his disciples
ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଡିସ୍କସନ କରିଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ଦି ଡିସ୍କସନ, ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲା, ଯୋଉ ଗୋଟା ଆସୁଥିଲା କଣ କହିଲ, ଡିସ୍କସନ ପରେ ଯାହାଟା ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, that decision was taken. So he did not use to take independent decision. ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟା ନିଆଯାଏ, that is called sermonization. sermonization ତାକୁ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଓକେ, sermonization. Is it fine? Okay, clear perspective, ready? So application of knowledge gives us success. लिखिल पिला, हाँ और लिखिबा, no growth or progress. Yes Rathendra, you can write down, बुझेला, you can write down this. Without knowledge there is no wisdom and no growth or progress. सेटा हमें लास्ट को लिखि देई परिबा। देख और लिखि दउची, पैराग्राफ कर दउची। देख, नॉलेज को 5 थर रिपीट करियानी। इट मेक्स ए weak man weak or weak and physically feeble person more powerful, more powerful than a physically strong and stout person. ହେଲା, it is ruminated as the destroyer of ignorance. Destroyer of ignorance. Okay, no pila, ignorance or not, by its tact and intelligence. Intelligence, one can get the better of the latter. जानी परछ पिला अर्थ, बेटर ऑफ द लैटर। इंटेलिजेंस मैन परवर्ती समय को माने फ्यूचर टा, जोटा कहंती फ्यूचर इज डार्क, कहंती नहीं, फ्यूचर इज डार्क। तेणु से लैटर टाइम टाकू माने फ्यूचर टाकू ये भलो करी दिए। बुझेला तो पिला, फ्यूचर टाकू ये भलो करी दिए। बेटर ऑफ द लैटर, बुझेला। ओनली देखो पिला, इट इज ओनली नॉलेज, हाँ लैटर मीन्स फ्यूचर, इट इज एटा लैटर, LATER डबल टी लिखि देछि कि नहीं, बेटर ऑफ द लैटर। इट इज ओनली नॉलेज व्हिच कैन मेक ए गुड माने फुलफिल योर ड्रीम, व्हिच you did not dream your dream,
you did not dream in your dream। ये तुम से स्वप्न को फुलफिल करिथाए जो गोटा तमे सत्तरे देखिथिल, जो गोटा तमे सोईकिरी देखि नथिल, जो गोटा तमे चेईकिरी देखिथिल सेटा को सत्य परिणत करे नॉलेज। कौन बुझी परछो पिला? सोईकिरी देखिबा अनकॉन्शियस मूड, चेईकिरी देखिबा आमे चाहूचु एटा। बुझेला? वन ऑफ दी सेठी गोटे एग्जांपल देई दबा। वन ऑफ दी ardent examples of knowledge, knowledge रो गोटे उदाहरण दउची हैला। of knowledge can be as is as follows। गोटे उदाहरण मु दउची नॉलेज कौन करि पारे ना। देखो पिला, ए प्रोफेसर can create a huge follower through his knowledge only। गोटे प्रोफेसर ह्यूज फॉलोअर तार हुंती केवल तार ज्ञान पाई, थ्रू हिज नॉलेज ओनली। ही मे बी ओल्डर और वीकर बट मेक्स द यंगर जनरेशन at his baker bake and call सर्विस। से बुढ़ा ही थाई पारे, से दुर्बल ही थाई पारे, तेणु बुढ़ा रहला यंग, दुर्बल रहला मोर एनर्जेटिक। younger and more energetic generation at his beck and call at his service हैला। this is understand ना नहीं? in fine it can be said that knowledge gives us recognition and approval to a man। मनीष बोली से गोटे परिचय दिए, गोटे मनीषर परिचय ता ज्ञान रु ही जना पड़ जाई थाए। इज इट क्लियर? पावर ऑफ नॉलेज पॉइंट गुड़ा देखिबो, मन को लिखिबो। आ मु आजी गोटे पैराग्राफ पूजा तते पठै दउची प्रेसी मोटे दांत बिंदुची पिला। एक्चुअली मु खाली बंद करिबिनी बिली टिके कह देली, तथापि गोटे काम करिया ना, खाली सेमति गले हबनी, भल लागिबनी। तमे लिखि सैल कि ना? ना रही जाओ, ये लिखि सैल तो तू केते जगन्नाथ बहुत लिखि परिबु। and leads to a better future throws a light। सुनो सरीनी मोर सरीनी, वर्तमान मेडिसिन नेबिनी कि रेस्ट नेबिनी? सुनो ब्रेक 2 मिनिट दउची, 2 मिनिट परे सुनो टिके। नाय नाय रेस्ट नेबिनी, सुनो 2 मिनिट परे मु किछि भोकाबुलारी देई देबी तुमको। तार धीरे धीरे अल्प 10-20 टा तार यूसेज सिंगल वर्ड किछि मने रहिबो। आमे प्रेसी रे यूज करिया ना, गोटे टच करे देबे अध घंटा, तापर जिबा टिके ब्रेक रे आसीबा। पिला ब्रेक रु टिके आसिया, ब्रेक रे। ओके हो चलो।
जय जगन्नाथ स्वामी भवनयन पथगामी। ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ଲେଖ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଉଛି ପିଲା ଦେଖ invective invective means abuse abuse माने रख abuse verb कले misuse but difference between misuse and abuse is there abuse और misuse भितर difference अछि abuse रो माने रख noun पिला abuse noun आर दीटा मीनिंग अछि गोटे होछि os रे पड़िबो insult आउ गोटे होछि corruption corruption देखिबो पिला insult when he was found guilty he got torrents of abuses abuse आ माने कौन कहलो पिला ये गोटे टीओ ये गोटे आसीगला हमर ये वर्ड कौन कहलो कलेक्टिव नाउन टरेंट्स ऑफ अब्यूज हला ये गोटे गला द्वितीय रे हला पिला देखो द्वितीय रे द सर्व शिक्षा अभियान स्कीम is open to administrative abuses administrative abuses बुझेला पिला कौन कहला करप्शन मन रखिथिबो प्रोफ्लिगेसी माने करप्शन जोटा कहती मु तुमको कहिछि अनेक थर डिबकेरी मंडे ठारू पिला सुन मु ठीक 7:30 बेलू
क्लास आरंभ करी ସେଇଟା ଡିବକେରି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବି କୋଉଠୁ ନା ଆମର ଏଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍। ଶୁଣ ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛି। ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢେଇକିରି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ତମେ ତାର ପ୍ରେସିସ୍ ଲେଖି ଦଉଛ, ମୁଁ ସେମିତି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ବୁଝେଇ ଦେବି ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲର, ତମେ ମନକୁ ମନ ଘରେ ସେଟା ଲେଖି ଆଣିବ। ମନେ ରଖିଥା ଆଠାର ବେଷ୍ଟ ୱେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଛି। ତମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ଲିୟର, ତମର ପ୍ରେସିଜ୍ କ୍ଲିୟର, ପ୍ଲସ୍ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଡିଆ ଗୁଡା ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ସବୁଦିନ ମୁଁ 7:30ଟାରୁ 8ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ନେବି ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ। 8ଟାରୁ 8:30 ମୁଁ ସବୁ 8ଟାରୁ 8:30 ଗୋଟେ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରେସିଜ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଯୋଉଟା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିବି 8:30ଟାରୁ 9ଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବି। ଏତିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଏଇ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ପଢେଇବି। ହେଲା? ସବୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବୋଲି ତ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଖାଲି ଦେହଟା ଭଲ ରହିଲେ ହେଲା। ଯା ଚାଲି ଯା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ସରିଗଲା ଏଟା ପ୍ରଫ୍ଲିଗେସି। ମତେ କହିବ ଦ ଜଜ୍, ଏଟା ସିଜିଏଲ ରେ ବି ପଡିବ, ଡ୍ୟାଶ ହିଜ ପାୱାର। ମତେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲା ମିସୟୁଜଡ ଅର ଆବ୍ୟୁଜଡ। କୁହ। ହଁ, ମିସୟୁଜଡ ଅର ଆବ୍ୟୁଜଡ। କୁହ ପିଲା। थैंक यू। abused his power। थैंक यू। अच्छा देखा, थैंक यू। he is being seized। ता माने इठी abused हला misuse। आउ misuse टा कोठी यूज करा जाए देख, द ऑफिसर has misused गवर्नमेंट फंड्स। देख पिला इठी मिसयूज तमे क्लोज टेक्स्ट रे भी पाई पार, फिलर रे पाई पार, छोट छोट सीजीएल रो। आम क्लास गुडा तमे सब बेले जानिथाओ पिला रोड टू डामास्कस। काई कहलो आमे जतो बळे सक्सेस पथरे आगेइबा हमकु बहुत गुडिया स्ट्रगल पड़े। आमे खाली डायरेक्ट स्ट्रगल सक्सेस पाई जीवानी। से स्ट्रगल गुडा होउची बाटरे गोटा गोटा क्वेश्चन पडितबो, जो क्वेश्चन मु ऑनेस्टली कहूची पिला मु ताकू कहिथबि तमरो मन नथबो। बहुत गुड़िए कलोकेशन मु कहिथिबि काले तमरो मने नथबो। लाइक मु जेम तुमको कहिथिली अति सहज बहुत किछि कहिछि, हेल फेलो ओएल मेट मु तुमको कहिछि पड़ी जाइथबो। कारण ए मु एभଳି जिन सबु टच करी पळौछि जेंति गुरु पुराना काल रे वेद पढ़ौथिले, श्लोक कहूथिले, धर्म विषय पढ़ौथिले, कर्म विषय पढ़ौथिले। राजकुमार को कहूथिले तमे जाओ जाल काटी आनिबो, एटा तमरो दायित्व, एटा होची कर्म। मु सेमति तुमको सहज शिखौची, कष्ट शिखौची, लाटेस्ट शिखौची, स्मार्टेस्ट शिखौची। कारण जीवन रो चला पथरे टुवर्ड्स योर सक्सेस एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल। तमे भाबना ये जिनिस कोन दरकारे। इन द फर्स्ट सेंटेंस एक्चुअली abuse means misuse, बट एटा कलोकेशन। जेमती रामजी तू मते पचारिबु जे सर आमे मु अटेंशन देबी, why cannot we use give attention, why should we use pay attention? Because this is the collocation। यार पर्टिकुलर यूज कुआ होउची। गिव एलोकेशन आमे कहि पारि, गिव अटेंशन आमे कहि परिबानी। गिव अटेंशन इज पे अटेंशन इज राइट। लाइकवाइज पावर abuse not misuse, but फंड्स पाखरे we use misuse। अंडरस्टैंड? तापरे सेकंड जिनिस देख पिला मिसयूज। abuse